Hello students, this is Sarita Agrawal and welcome to my YouTube channel Agrawal Study Point. In this video, we will discuss what are the membership operators in tuple, how we can join tuples using concatenation operators, how we can repeat tuples using replication operator, then we will discuss comparison of tuples. Let's start these topics in detail one by one. First one is membership operators. There are two membership operators in Python. First one is in membership operator and second one is not in membership operators. In operator क्या करता है? It tells the presence of an element in the tuple. That means it returns true if an element is present in the tuple. Otherwise, it returns false. See this example. Here it is a tuple having some strings Ritu, Parul and Neha. Now check the string Parul in tuple T. In operator क्या करेगा? It returns the presence of this string Parul. Now you can see here this string Parul and this string Parul in tuple T. Both are same. देखो दोनों का अपर केस ये जो फर्स्ट लेटर है वो कैसा है? अपर केस भी है and rest all characters in both the string are in lower case and in both the string all the rest characters last four characters are same है और लोअर केस में है. So both the strings are same, this one and this one, both the strings are same. So this string Parul is present in the tuple T. So in membership operator returns true. Next one is not in membership operator. Not in operator क्या करता है? It returns true if an element is not present in the tuple, otherwise it returns false. See, here I am taking the same tuple as the previous example. T is a tuple having three strings Ritu, Parul and Neha. Now check Parul not in T. Here I am using not in membership operator. Not in membership operator क्या करेगा? When this string is not present in the tuple T, then it returns true, otherwise it returns false. But this string Parul and this string Parul in tuple T both are same. That means this string Parul is present in the tuple T. So not in operator क्या करेगा? It returns false because this is present. यदि ये string present नहीं होती tuple T में तो ये क्या return करता? True. But ये present है, so it returns false. Now let's do this. Practically also, I am taking a tuple T having some element. There are four integers in this tuple. Now check 5 in T. Tuple T में 5 present है या नहीं? Yes, 5 is present in this tuple, so it returns true. Okay, now I am checking 5 in tuple T. अब देखो 5 कैसा है बेटा? अब 5 is not an integer. Now it becomes a string. अब ये क्या हो चुका है? Because it is written as in a single quotes, so it is a string type, not a integer value. So this in operator returns false because string 5 is not present in this tuple. Okay, now check this 5 not in tuple T. तो not in operator क्या करेगा? It returns true because this string is not present in this tuple T. Tuple T में present नहीं है string 5, so not in operator क्या return करेगा? It returns true. Okay, now I am taking another tuple T1 having some string Poonam, it is Neha. Now I am checking Neha in T1. Neha T1 में present है या नहीं? देखो both the string are Neha, but cases are different. Here जो upper case n है नेहा में फर्स्ट कैरेक्टर क्या है? n अपर केस में है और यहाँ स्ट्रिंग नेहा में फर्स्ट कैरेक्टर n किस में है? लोअर केस में है. सो आज की वैल्यूज ऑफ बोथ द n कैसी होंगी? डिफरेंट होंगी. सो दिस स्ट्रिंग नेहा
is different from this string Neha. So this string is not present in the tuple T1. In operator returns false. Clear? If I am changing this lowercase n to uppercase n, now this string is present in T1. So in operator returns true. Now I am taking another string Ritu in T1. Ritu is not present in this string, so it returns false. If I am checking for not in operator, not in operator क्या return करेगा? True, because Ritu is not present in this tuple T1. Ritu string is not present, so it returns. Now next one is joining tuples. The concatenation operator is represented by a plus symbol and it is used to join one tuple to the end of another tuple and it creates a new tuple. When we use concatenation operator on tuples, then it requires both the operand must be of tuple type. See this example. Here T1 and T2. These are two tuples having some elements. Now we are using concatenation operator T1, concatenation operator and T2. Okay, both the operand कैसी होनी चाहिए? Must be tuple type. T1 and T2 both are the operands and this is the प्लस सिंबल क्या है? दिस इज द ऑपरेटर. कौन सा ऑपरेटर है? कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर. अब हमें क्या करना है? ज्वाइन करना है T1 एंड T2 को. तो ये कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर क्या करेगा? फर्स्ट राइट द एलिमेंट्स ऑफ टपल T1 and then these elements are followed by the elements of tuple T2, that is second operand. Okay, this one is here and elements of T1 is here. अब ये देखो बेटा T1 के जो एलिमेंट्स हैं 2, 3 एंड 5, उनका सीक्वेंस वही होना चाहिए जो सीक्वेंस यहाँ पे है. ओके, जो T1 में सीक्वेंस है 2 फिर 3 देन 5, तो सीक्वेंस वही होना चाहिए 2, 3 एंड 5. ऐसा नहीं है कि 3, 2, 5 है या 5, 3, 2 है या 5, 2, 3 है. नो, एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो वही रहेगा जो T1 के एलिमेंट्स का ऑर्डर है. देन दीज एलिमेंट्स आर फॉलोड बाय द एलिमेंट्स ऑफ T2 और T2 के एलिमेंट्स का ऑर्डर भी वही रहेगा जो ओरिजिनल T2 में ऑर्डर है एलिमेंट्स का. 4 एंड 6 है, देन यहाँ भी 4 एंड 6. ओके, इफ वी वांट टू असाइन the result of concatenation operator into another variable, then we can do that by using the assignment operator. This is a single equals to sign क्या है? This is the assignment operator and the result of T1 concatenation of T2 अब किस में स्टोर हो जाएगा? T3 में. If we want to display the T3, then we write T3. तो T3 में क्या वैल्यू है? सेम 2, 3, 5 and 4, 6 as the previous one. So join operation क्या कर रहा है? It will create a new tuple here and here. It will create a new tuple. Okay. Now you should remember this is the valid statement when we use concatenation operator on tuple. This is the concatenation operator when we use on tuples. Then both the operand must be of tuple type. So it is a valid. Okay. But in the last three statements, these three statements are not valid because one operand तो क्या है बेटा? tuple है, but जो second operand है this is not a tuple. This is a number and this is string and this is list. Second operand is not valid, so the complete statement is not valid when we use concatenation operator on tuple. Clear? Now let's do this practically also. Now I am taking a tuple T1 having some elements 3 and 7. Now I am taking another tuple T2 having element 8, 9 and 3 as integers. Okay. Now T1 concatenation operator and then T2. ये क्या करेगा? First element of T1 then followed by the elements of T2. देखो ऑर्डर सेम है 3, 7 and then elements of T2 8, 9, 3. If I write T2 plus T1
तो क्या होगा बेटा, देन व्हाट विल हैपन, पहले क्या एलिमेंट्स आएंगे T2 के, देन आफ्टर दैट एलिमेंट्स ऑफ T1. नाउ सी हियर, पहले एलिमेंट्स किसके हैं, T2 के, एंड आफ्टर दैट एलिमेंट्स ऑफ T1. That means order of operands, when we use concatenation operator, then order of operand matters. Okay, if we change the position of operands T1 and T2, then the result will be different. You can see here the result is different and here the result is different. Okay, when we change the position of T2 and T1, when we use concatenation operator. Okay, so you should remember, when we use concatenation operator, then according to your requirement, you have to write the operands, order of operands T1 and T2. Okay, you should remember this. Next is, if you want to store the result of this joining operation into a third variable, then we can do that by using the assignment operator. Now इसका जो result है वो किस में store हो गया बेटा, T3 में. Now we want to display the T3. What are the elements in T3? Then we can write T3. 8, 9, 3, then 3 and 7. पहले किसके एलिमेंट्स हैं, T2 के, एंड देन ये किसके एलिमेंट्स हैं, T2 के, देन एलिमेंट्स ऑफ T1. क्लियर. नेक्स्ट इज repeating or replicating tuples. Like strings and list, we can use replication operator. Replication operator is represented by a symbol of multiplication, and it is used to repeat a tuple specified number of times, and it creates a new tuple. When we use replication operators on tuple, then it requires two operands. One is a tuple and other one is an integer. Okay, and these two statements are valid when we use replication operator. One is a tuple and other one is an integer. Okay, and order of these two operands does not matter in case of replication operator. Both the statement will give the same result. And these two statements, last two statements, are invalid because one operand is a tuple. It's okay, but the second operand is not an integer. Second operator क्या है? It is not an integers when we use replication operator. So both these statements are invalid in case of replicating tuples. Now see this example also. Here T is a tuple having two integers 2 and 5. Now T replication operator 3. This is a tuple or this is a integer. Okay, that means T के जो एलिमेंट्स हैं वो कितने टाइम्स रिपीट होंगे, 3 टाइम्स. 2, 5, ऑर्डर सेम रहेगा एलिमेंट्स का, 2, 5 एंड देन 2, 5. और टपल इज रिपीटेड स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स. इसको बेटा ऐसे नहीं करना है आपको, 2, 5 देन 2, 5 एंड देन 2, 5. टपल रिपीट नहीं हो रही है 3 टाइम्स. ओके, दिस इज रॉन्ग. टप्पल रिपीट नहीं हो रही है, ये गलत है बेटा. ठीक है, टप्पल रिपीट नहीं हो रही है 3 टाइम्स. आपको क्या करना है, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग. टप्पल रिपीट नहीं करनी है आपको. आपको क्या करना है, टप्पल की जो एलिमेंट्स है ना उनको 3 टाइम्स रिपीट्स करना है विद इन द राउंड ब्रैकेट्स. ओके, 2, 5, 2, 5 एंड 2, 5. नेक्स्ट वन is the tuple having same elements 2 and 5, but this time देखो मैंने क्या यूज किया है, T replication operator, और विद इन द राउंड ब्रैकेट्स हमने क्या लिखा है, 3 देन फॉलोड बाय अ कॉमा. नाउ अब ये 3 क्या है, नाउ 3 इज अ टपल एलिमेंट. ओके, अब ये क्या है, 3 इज अ टपल एलिमेंट. दिस इज अ टपल विद अ सिंगल एलिमेंट. व्हेन वी राइट टपल विद सिंगल एलिमेंट, तो क्या फॉर्मेट है उसका लिखने का, एलिमेंट सिंगल एलिमेंट विद फॉलोड बाय अ कॉमा. ओके, सो दिस नाउ दिस बिकम्स अ tuple. It is not a integer, so it will give the type error. We can't multiply sequence by non-int of type tuple. Okay, we can't replicate a tuple with another tuple because this second operand is not an integer. Now let's do this practically also. Now I am having a tuple
6 and 8. नाउ t 2, यहाँ पे क्या वैल्यू ले रही हूँ मैं, इंटीजर 2. दैट मीन्स जो टप्पल t के जो एलिमेंट्स हैं वो कितनी टाइम्स रिपीट होंगे, 2 टाइम्स. ओके. नेक्स्ट इज, नाउ आई एम यूजिंग 2 एज अ टप्पल एलिमेंट. नाउ 2 कैसा एलिमेंट हो गया है, टप्पल एलिमेंट. दिस इज अ कंप्लीट टप्पल विद अ सिंगल एलिमेंट 2. नाउ इट विल गिव द error. We can't multiply sequence by a non-int of type tuple. Okay. Now let's comparing tuples. You can compare two tuples using the comparison operators, and comparison operators are also called relational operators. In Python, there are 6 relational operators: less than equals to, greater than equals to, double equals to, and not equals to. And you should remember, we use the double equal to sign for the equality comparison. Okay, and both the tuples must be of same type, that is having the comparable type of values. To understand this, what is the meaning of comparable type of values, let's take this example. T1 is a tuple having 2 elements 1 and 2. Now T2 is another tuple having 2 elements but of string type A and B. 1 और 2 ऐसे हैं integer elements हैं. Now A and B are elements of string type. Now condition is T1 less than T2. हमें क्या चेक करना है, T1 less than T2. अब देखो, जब टपल्स को हमने लेस देन चेक करना है तो हमें क्या करना है, कंपेयर करने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करना है. ओके, फर्स्ट एलिमेंट इसका क्या है, 1, दैट इज ऑफ इंटीजर टाइप. एंड T2 का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, A, एंड दैट इज ऑफ स्ट्रिंग टाइप. सो वी कांट कंपेयर इंटीजर विद स्ट्रिंग. ओके, सो इट गिव द टाइप एरर, less than not supported between instances of int and str. So to compare tuples, corresponding element must be of comparable type. या तो दोनों एलिमेंट कैसे होने चाहिए थे, स्ट्रिंग, या दोनों कैसे होने चाहिए थे, इंटीजर. Here both the elements are of different types. So these elements are not of comparable types. So it will give the type error. Next one is, here I am using 3 tuples, T1, T2 and T3. These are the 3 tuples. Now we have to check T1 equals to T3. ये कौन सा ऑपरेटर है, इक्वालिटी कंपैरिजन. ये T1 एंड T3 को हमें क्या करना है, चेक करना है फॉर द इक्वालिटी कंपैरिजन के लिए. नाउ सी हियर, दिस इज द T1 एंड T3. T1 क्या है, दिस वन, 1, 3 and 5, एंड दिस इज द T3, 3, 1 and 5. देखो, इक्वालिटी के लिए सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि दोनों में जो एलिमेंट्स हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होनी चाहिए. ठीक है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है. नाउ सेकंड कंडीशन क्या है चेक करने के लिए, कि उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम होनी चाहिए. कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या मतलब है कि जो सेम इंडेक्स पे एलिमेंट्स हैं उनकी जो वैल्यूज है वो सेम होनी चाहिए. ठीक है, सेम इंडेक्स पे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होनी चाहिए. अब ये देखो, इसमें 0th इंडेक्स पे क्या एलिमेंट है, 1, और इस पे 0th इंडेक्स पे क्या एलिमेंट है, 3, एंड बोथ द एलिमेंट्स आर डिफरेंट, बोथ द एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल. सो T1 नॉट इक्वल्स टू T3. ये मत देखना बेटा कि कंटेंट सेम है, 135 इसमें है, 135 इसमें है. पहले चेक किया, हाँ भाई दोनों में 3 है, यस ठीक है. फिर देखा कि इसमें भी 135 है, इसमें भी 315 है, सो दोनों इक्वल है. नो, आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि जो दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, दैट इज तो सेम इंडेक्स पे जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. हियर एट द फर्स्ट एलिमेंट 1 and 3, फर्स्ट एलिमेंट जो है, बोथ द टपल्स आर नॉट इक्वल. सो T1 and T3 आर नॉट इक्वल. सो इट विल गिव द रिजल्ट एज फॉल्स. क्लियर. नेक्स्ट वन इज T1 ग्रेटर देन T2. हमें क्या चेक करना है, T1 जो है T2 से ग्रेटर होना चाहिए. अब ये देखते हैं T1 और T2 दोनों का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, इक्वल है. सो मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट. 3 and 3 दोनों का सेम है, देन मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट. 5 and 5 बोथ एलिमेंट्स आर सेम, सो मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट. बट T1 में कोई एलिमेंट नहीं है एंड T2
is having one extra element, that is 7 at third index, है ना. So T2 is greater as compared to T1. So this condition is false because T2 is greater है और condition क्या कहती है कि T1 greater होना चाहिए, but T2 greater है, so this condition is false. Next one is T2 less than T3. देखो this is T2 and this one is T3, है ना. One is less than T3, yes, condition is true, so the result is true. Next, T1 not equals to T3. yes, T1 दोनों में एलिमेंट्स कैसी हैं, सेम है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, बट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, इसमें 1 है और इसमें क्या है 3. बोथ द एलिमेंट्स आर नॉट सेम, आर नॉट इक्वल, सो T1 इज नॉट इक्वल्स टू T3. तो नॉट इक्वल्स टू टॉप क्या करेगा, इट रिटर्न्स ट्रू बिकॉज बोथ द टपल्स आर नॉट इक्वल, so it will give result as true. Next one is here T1 is a tuple having 3 string A, B and C. वो तीनों जो स्ट्रिंग है, जो कैरेक्टर्स हैं, वो किस में है बेटा, लोअर केस में है, A, B and C. And T2 is another tuple having 2 elements A and B, and both A and B are in upper case. Now we have to check T1 is greater than T2. T1 क्या है, greater than है T2. Now to compare the characters, हम क्या यूज करेंगे, वी हैव टू यूज ASCII वैल्यूज. देखो स्मॉल a की जो है ASCII वैल्यू कितनी होती है बेटा, 97. ओके, और अपर केस a की जो ASCII वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 65. तो हम इस केस के लिए देखें तो हमारे पास जो स्मॉल a है इसकी वैल्यू कितनी है, 97, और लोअर केस अपर केस a की कितनी है, 65. तो 97 इज ग्रेटर देन 65, यस, कंडीशन इज ट्रू, है ना. 97 क्या है, 97 is greater than 65, condition is true, so it will give the result as true. Next one is T3 and T4. We are having two tuples, both the tuples having one string only. देखो इसमें भी one string है, that is June, और T4 is having one string, that is July. Okay, now we have to compare T3 and T4. T3 is greater than T4. तो फर्स्ट कैरेक्टर दोनों का क्या है, स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करेंगे, और कैरेक्टर को किस बेसिस पे कंपेयर करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ASCII वैल्यू. तो इसमें जे क्या है, दोनों में अपर केस पे है, ठीक है, दोनों सेम है. नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट, यू इन बोथ द स्ट्रिंग इन लोअर केस, सो मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट. एन एंड एल, हियर एन और एल बोथ इन लोअर केस में है, बट n जो है अल्फाबेट में l के बाद आता है, so n is having the higher ASCII value as compared to the l. So overall the ASCII value of किसकी, जून की greater हो जाएगी as compared to the ASCII value of July, so this string is greater. ठीक है, तो tuple T3 is greater than T4, this is true. Next, मैंने इसमें क्या चेंज किया है बेटा, ये लोअर केस वाला जो n था इसको मैंने क्या कर दिया है, अपर केस n कर दिया है. This is a T3 and this is T4. Now T3 is greater than T4. हमें क्या चेक करना है, T3 is greater than T4. देखो J और J यस सेम है, दोनों अपर केस में है. नेक्स्ट U दोनों लोअर केस में है, दोनों सेम है. सो मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट, हियर इज N, इधर इज L. वो N क्या है, ये अपर केस का है, और L कैसा है, लोअर केस. और जितने भी अपर केस लेटर्स हैं उनकी जो ASCII वैल्यू होती है वो लोअर होती है एज कम्पेयर टू द ASCII वैल्यूज ऑफ लोअर केस लेटर्स. ठीक है, तो ये अपर केस का जो n है इसकी ASCII वैल्यू क्या होगी, लेस होगी एज कम्पेयर टू द ASCII वैल्यूज ऑफ लोअर केस l. सो T3 कैसा हुआ, लेस हुआ एज कम्पेयर टू T4 बिकॉज दिस स्ट्रिंग जुलाई हैज हायर ASCII वैल्यू एज कम्पेयर टू द ASCII वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग जून. सो दिस will give the result as false. Okay, now let's do this practically also. I'm having a tuple 6 and next one is T2 7 and next is T3 8 and 9. Okay, now compare T1 equals to T2. No, because ये दोनों में 3 एलिमेंट्स हैं, बट
these elements are not same as T2. So this will give result the false. Now check T1 is less than T3. देखो T1 में क्या है 3 5 6 और T3 में क्या है 6 7 8 9. 3 क्या है 3 less than है 6 से. Yes, condition is true. So it will give the true. Now check T2 is greater than T3. अब देखो T2 में क्या है बेटा 4 और T3 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 6, है ना. तो T2 कैसी होगी, लेस होगी T3 से. So it will give the result as false. Clear? Now T2 not equals to T3. T2 and T3 इसको कंपेयर करना है कि दोनों इक्वल है नहीं है. अब देखो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं और इसमें कितने हैं 4 एलिमेंट्स. तो आपको एलिमेंट्स को चेक करने की जरूरत ही नहीं है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन T2 एंड T3 टपल्स, इन दोनों टपल्स में क्या है डिफरेंट है. ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन T2 एंड T3 are different, so it will give the result as true because both the tuples are not equal. Clear? If I am having a tuple T3, but this time I am using a tuple of string. Next one is T4. Now I am taking a element A and element of B as a string. Okay, now I am using the condition T3 is greater than T4. So ये क्या करेगा, T3 and T4 को कंपेयर करना है टपल्स को एंड 1 by 1 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करना है. इसमें क्या है, इसमें है स्ट्रिंग में सिंगल कैरेक्टर A इन लोअर केस और इसके जो पहली स्ट्रिंग है उसमें क्या है सिंगल कैरेक्टर A इन अपर केस. तो देखो लोअर केस A की जो आज की वैल्यू है वो कितनी है 97 है और अपर केस A की जो आज की वैल्यू है वो कितनी है 65. बिकॉज व्हेन वी कंपेयर द स्ट्रिंग इन पाइथन then we have to compare the characters by using the ASCII values. Okay, तो अपर केस A की कितनी है 65 और लोअर केस A की है 97. So 97 is greater than 65. Okay, condition is true, so it will give the result as true. I hope all the topics are clear to you. If you have any doubt, then write in the comment section. If you like my video, then like, comments and share my video and subscribe my YouTube channel Agrawal Study Point, and don't forget to press bell icon to get latest updates for my upcoming videos.